Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करूची जदि भल लागिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ाया पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें प्रोबेबिलिटी विषय रे पढिबा जहार हमें आज सेकंड पार्ट देखिबा ऑलरेडी हमें जानिला जे प्रोबेबिलिटी होउची गोटे रैंडमली तमे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करछो तारो को हिसाब रे आउटकम आसुची ताकू नै कि हमें गोटे चांस क्रिएट करूछु ताकू कहूछु हमें प्रोबेबिलिटी ओके सो प्रोबेबिलिटी रे मेन कथा हैला किछिरा सर्टेन प्रॉपर्टीज रहइबो आ पोस्टुलेट्स रहइबो जोटा कि गोटे एक्जियोमेट्रिक अप्रोच आडकू जाउची ओके सो एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी को हमें जीवा ता पूर्वरु आमे जानि नेबा जे व्हाट इज अ सैंपल स्पेस देखो सैंपल स्पेस कहले जे कोनसी गोटे रैंडम एक्सपेरिमेंट तुम परफॉर्म करछो आउ तार जेते सब पॉसिबल आउटकम्स अछि ताकू जदि हमें सेट हिसाब रे रिप्रेजेंट करबा ताकू कहबा हमें कोन सैंपल स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय S फॉर सैंपल ओके सपोज फॉर एग्जांपल जदि तमे सपोज गोटे कॉइन को टॉस करूछो ओके कॉइन गोटे को जदि टॉस करूछो ताहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स केते हबो 2 या तो हेड पडिबो किंबा टेल पडिबो सिमिलरली गोटे लूडो रो डायस को तमे रोल करूछो ताहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स केते हबो 1 2 3 4 5 6 सो 6 हे गला यार पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल टा एटा हे जिवो तमरो सैंपल स्पेस ओके सो एठी गोटे जिनस मन रख जेते टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अछि सैंपल स्पेस भितरे ताको हम डिनोट करबा ns रे जेमति कहली गोटे कॉइन को टॉस करले हेड टेल सो ns हे गला 2 गोटे जदि तमे दुईटा कॉइन को एबे जदि टॉस करछो किमा गोटे कॉइन को दुई थर टॉस करछो ताले एबे हे जिवो यार वैल्यू 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 तीन थर जदि टॉस करले 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू 8 एंड सो ऑन सो 2 टू द पावर n हेगला यार जनरल फार्मूला ओके सिमिलरली लूडो कथा कहली जदि सिंगल टाइम तमे रोल करूछो डायस को ताहले 1 2 3 4 5 6 दैट इज 6 टू द पावर 1 जदि दुई थर रोल करूछो बा दुईटा डायस को पकोउछो ताहले एबी हे जिवो यार वैल्यू 6 रो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 और इन जनरल फॉर n number of rolls or by rolling n dice we have the value ns to be equal to 6 to the power n okay तबे मन करा जाऊ कॉइन रो एग्जांपल को पुनी वापस आसीबा सपोज गोटे कॉइन को हमें तीन थर टॉस कला बा तीनटा कॉइन को हमें टॉस कला ताले एटा तो ही गला तमरो सैंपल स्पेस याको हमें एबे लेखि परिबा सपोज ए हेड को हमें लेखिबा w1 हेड टेल हेड को w2 एंड सो ऑन ओके माने हमें प्रत्येक जो इवेंट को गोटे गोटे करी लिखि देला ओके पॉसिबिलिटी को तापरे एबे हमें सेट करूछु जे सपोज e1 e फॉर इवेंट e1 हे वाला इवेंट फॉर गेटिंग ऑल हेड्स ताले यार वैल्यू केते h बा हेड व्हिच इज w1 सिमिलरली e2 कहबा इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स माने हेड टेल हेड भी ही परिबो टेल हेड भी ही परिबो हेड टेल भी ही परिबो सो तीनटा आसी गला यारो पॉसिबिलिटी राइट सिमिलरली some other events can also be determined okay so ei sabu event को जदि हमें देखिबा these are nothing but containing inside that sample space okay so every event may be expressed as a disjoint union of the single element subsets of that sample space S or a disjoint union of same subsets of some subsets of S okay so here events are nothing but sets
and the algebra of sets may be used for dealing with them. So एबे आसी जिबा आमे जो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करबा पई आमे सेट रो एल्जेब्रा को यूज करबा जोटा तुम ऑलरेडी प्लस 2 रे पढिथिबो सेट थ्योरी विषय रे तुम ऑलरेडी जानिछो यूनियन लाइक इंटीग्रेशन जोटा प्रीवियस क्लास रे भी हमें देखिथिला कॉम्प्लीमेंटरी ओके सो जदि मने करा जाऊ आमे दुईटा इवेंट नोचू ए बी एंड दे आर सेट टू बी डिसजॉइंट और डिसजॉइंट माने दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मने करो गोटे कॉइन को टॉस करूछो ताले आउटकम या तो हेड हबो किबा टेल हबो जदि हेड होउची ताले टेल आसीबो नाही जदि टेल होउची ताले हेड आसीबो नाही ओके दैट मीन्स they cannot happen simultaneously right so ebe jodi ame yaro intersection kariba tale it will be obviously a null set so if a and b are disjoint events then a intersection b is a null set that is 5 and the probability of getting a intersection b is p5 is nothing but 0 okay so this probability of a intersection b is 0 provides you a criteria for finding if A and B are actually mutually exclusive or not. Okay. तापरे axiomatic probability रो एबे definition को हमें आसीबा. Okay. So देखो ये कौन सी गुटे sample space गुटे random experiment रो दिया जाइछि then the probability of occurrence of any event A is defined as a set of function PA which is satisfying some of the axioms कौन से axioms total तीनटा axiom अछि number 1 रे ये कहूछि PA which will be defined and it should be real and non-negative so PA should be greater than or equal to 0 याको कहबा हमें axiom of non-negativity then second axiom कहूछि जदि हमें sample space रो probability बाहर करबा ताले यार value is equal to 1 which is the axiom of certainty and नाइ जदि हमें suppose a1 a2 dot 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 up to an जाय गला is any finite or infinite sequence okay finite ही पारे किंबा infinite sequence ही पारे of that disjoint events एटा सब sample space रो then the probability of the unions from I equal to 1 to n of ai is nothing but the summation over pai ओके सो एठी देखो लिमिट ता हायर लिमिट ता n लिखिछि माने एटा होछि जदि फाइनाइट नबो आ नै जदि तमे इनफाइनाइट नै जाउछो त लिमिट ता हमें चेंज कर देले इन्फिनिटी को ओके व्हिच इज द एक्सियम ऑफ एडिटिविटी ओके सो एई सब एक्सियम सो मिसी की हमें डिफाइन करि परिबा एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी को ओके आउ बाकी रहिला these terms you already know the union the intersection the complementarity okay that means a does not happen okay so eta tome easily nije read out kari paribo आकु टिके देखिबा एबे देखिबा हमें प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली केमती लिखि परिबा ओके जदि गोटे सैंपल स्पेस अछि s ताले गोटे रैंडम एक्सपेरिमेंट पई जदि हमें कहला एठी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम टोटल हे जाउची कैपिटल N that is ns equal to capital N then the number of occurrence or the sample points for a particular favorable event suppose a ताले na जदि यार नंबर टा हैला ताले probability of that particular event pa will be equal to na by ns which is na by capital N ओके ए हिसाब रे हमें मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करि परिबा ओके अच्छा आकु बढ़िबा नाउ लेट अस सी द एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ये कौन कहूची the probability of occurrence of at least one of the two events A and B is given by P of A union B equal to PA plus PB minus P of A intersection B okay याकू इजीली तमे प्रूव करि परिबो ओके प्रूफ पार्ट को तुमको रीड आउट पई छाडी दोची निजे सेल्फ स्टडी करि परिबो देखो एई जो थ्योरम रे हमें याकू जदी जनरलाइज करबा को चेष्टा करबा ताले एटा जनरलाइज भी ही परिबो तबे ता पूर्वरु गोटे जिंस मने रखो जदी हमें दुईटा सेट न नै कि तीनटा सेट नेला ताले कोन हबो देखो सपोज हमें तीनटा इवेंट नउछु p of a1 union a2 union a3 ताले याकू मध्य हमें
सिमिलरली ए हिसाब रे लिखि परिबा आ गुटे जिंस देखो एठी गुटे सिंबल लागला लेस देन और इक्वल टू कहीं की बिकॉज इंटरसेक्शन जो अच्छी इट कैन बी आइदर 0 और ग्रेटर देन 0 ओके तेणुक ये लेस देन और इक्वल टू लगिला आ जनरलाइज जमती कहूली ये लेस देन इक्वल टू करी a1 अप टू an करी आमे सबू प्रोबेबिलिटी को ऐड करि परिबा। अच्छा एबे आसीबा आमे जो ए इंटरसेक्शन कथा कहूतला जदि ए एडिशन थ्योरम रे आमे ए सबू इवेंट को कहबा जदि से माने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने डिपेंड करू नाहंती ओके निज भितरे ताले द प्रोबेबिलिटी ऑफ a intersection b is nothing but 0 because यार वैल्यू टा नल सेट हबो a intersection b रो वैल्यू तेणु यार वैल्यू टा 0 हो जिवो प्रोबेबिलिटी रो ओके सो ए केस रे एबे ऊपरे जो हमें देखुतला जो तरे कि एठी उटे माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b थिला ए टर्म टा केते हो जिवो 0 हो जिवो सो हमें केवल ए दुईटा टर्म को रिटेन करि परिबा ओके आ जदि याकू आमे जनरलाइज करूछु ताले मध्ये आमे जनरलाइज वे रे भी याकू लिखि परिबा देखो इन दिस वे जदि तीनटा सेट नेला ताले सिंपली pa plus pb plus pc हबो आ जदि n नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने रखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस रे एटा हबो n नंबर of unions will be equal to nothing but the summation of the respective probability of the events okay अच्छा एबे आमे आकु बढ़िबा नाउ द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आमे तो देखिला एडिशन थ्योरम एबे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पाई आमे कोन करिबा एठी थ्योरम कहउची द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस हैपनिंग ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी ओके सो एठी आमे डिस्कशन करिबा मल्टीप्लिकेशन रे इंटरसेक्शन को ओके सो p ऑफ a इंटरसेक्शन b which is equal to pa into p of देखो ये जो b तापर बार a दला ओके दिस इज नथिंग बट द कंडीशनल अप्रोच एंड p of b bar a is nothing but conditional probability of happening of b under condition that a has happened okay अब तार उल्टाटा ही जो p of a bar b राइट सो एटा आछि हमर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम रे ओके तो यार प्रूफ पार्ट को भी अगेन मु स्किप करूची राइट जनरलाइजेशन को जिबा यदि तीनटा सेट अछि ताले तीनटा इंटरसेक्शन अकॉर्डिंगली एबे यार वैल्यू ए हिसाब रे आसीबो जनरलाइजेशन फॉर n नंबर ऑफ इवेंट्स वी कैन हैव द वैल्यू लाइक दिस ओके ना इंडिपेंडेंट इवेंट्स जदि इवेंट माने इंडिपेंडेंट अछंती परस्पर सहित डिपेंड करू नाहंती ताले ए केस रे कोन हबो if a and b are independent events so that the probability of occurrence or non occurrence of a is not affected by the occurrence or non occurrence of b then we have p of a bar b equal to pa or p of b bar a equal to pb ताले ताकू अबे जदि हमें पुट करिया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम टा एबे सिंप्लीफाई हिजबो फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स दैट इज p of a intersection b is equal to pa into pb सिमिलरली जदि हमें तीनटा सेट नेबा ताले मध्ये याकू लिखि परिबा आ जनरलाइज करी कि भी हमें लिखि परिबा फॉर n नंबर ऑफ इवेंट्स वी हैव दिस मच राइट अच्छा देन मूविंग फर्दर दिस इज a very important line or theorem p of a bar माने गोटे कॉम्प्लीमेंटरी रो हमें प्रोबेबिलिटी नेबा ताले it will be equal to how much 1 minus pa याकू जदि बुझिबा ताले मन रखो सपोज एटा आसी गला तमरो ए मझी रे होची सपोज दिस इज सेट a ताले यार कॉम्प्लीमेंटरी पार्ट बा a बार हबो के कोटा एटा जोटा एठी बाहर अछि तणु एठी ए जो टोटल टा हला हमर सैंपल स्पेस जहा पई प्रोबेबिलिटी होची 100 माने कहबा हमें कोन 100% दैट इज इक्वल टू 1 सो आमे यदि a बार पई प्रोबेबिलिटी काढिबा ताले इट इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ pa it is the value of probability of a bar right so ए आसी गला हमर वैल्यू ए थ्रू ए पिक्चर रु कि क्लियरली तमे बुझी पारथबो सो याको हमें बहुत जगह रे यूज करबा जेतेले हमें प्रॉब्लम सॉल्व करबा देखिबा ओके सो
आउ कि तुम देख ये थियोरम्स अच्छी व्हिच आई एम लिविंग फॉर यू ओके एटा तुम इजिली रीड आउट करि परिबो आमे एबे डायरेक्ट जिबा इन ऑर्डर टू सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ओके देखो एबे आसीगला एग्जांपल केतेटा एग्जांपल एबे आमे सॉल्व करबा को ट्राई करबा ओके देखो एटी फर्स्ट एग्जांपल रे इवेंट कथा कहूची लेट ई बी द experiment of tossing a coin 3 times एमती भी कही पारे और tossing coin 3 times न कही कि 3 coins are tossed at a time एई भलिया भी लिखि पारे सो एठी कहूची construct the sample space एटा इजीली तुम construct करि परिबो ऑलरेडी हम आगु देखि सारलानी नाउ राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ टू इवेंट्स E1 and E2 कौन E1 E2 E1 होची इवेंट दैट द नंबर ऑफ हेड्स exceeds the number of tails E2 कौन E2 होची इवेंट गेटिंग हेड इन द फर्स्ट ट्रायल ओके तापरे प्रोबेबिलिटी बाहर करो PE1 PE2 and assuming that all elements of S are equally likely to occur okay so हमें एठी स्टेप बाय स्टेप या कुजिबा ए जो सैंपल स्पेस को हमें लिखिबा जोटा कि गोटे कॉइन को 3 थर टॉस करले आसीबो राइट एटा हमें लिखि देला तापरे E1 E2 को बाहर करिबा E1 कहूची कोन जे it is the event that number of heads exceeds the number of tails okay head संख्याटा tail संख्यारो बेसी हबो accordingly एठी हमें लिखि देला very important it also contained HHH okay so head संख्या tail टू बेसी थिबो माने tail 0 भी हे पारे okay so this you need to remember okay so हमें पाइला एठी यार संख्या आछि 4 similarly E2 getting head in the first trial हे जबो सब बळे फर्स्ट हमें हेड रखी की जते सब पॉसिबिलिटी को लिखि देला एठी मध्ये यार वैल्यू 4 आसिला ताले यार प्रोबेबिलिटी हमें इजीली बाहर करि परबा बिकॉज़ सैंपल स्पेस रे टोटल होची 8 so 4/8 in each case हे गला तो हमर वैल्यू आसी गला हाफ दैट इज 1/2 और 50% ओके तापरे नेक्स्ट एग्जांपल रे एठी कहूची गोटे कमिटी तयारी करा जाउची which is consisting of 4 persons okay तापरे ए 4 persons केमती आसीबे out of these 4 persons actually we are taking from 3 officers of the production department 4 officers of the purchase department 2 officers from the sales department and 1 chartered accountant okay so probability बाहर करो of forming the committee in the following manner हमको एबे दे देला 1 2 3 टा प्रथम कहूची there must be one from each category सब category जणे जणे थिबे सेकंड कहूची it should have at least one from the purchase department और थर्ड कहूची the chartered accountant must be in the committee okay so first case को हमें डिस्कस करबा आगु एठी हमें सैंपल स्पेस बाहर करबा को पड़िबो हमरो एठी टोटल केते जण अछंती देखो 3 4 2 एंड दिस इज 1 सो ये सब टोटल को ऐड कर देले 10 जण अछंती ओके सो ए जो 10 जण भितरु हमको कमिटी रे 4 जण को नै कि कमिटी तयारी करिवार अछि सो इट कैन बी डन इन द combination way that is 10C4 okay so exhaustive number of cases हम इजीली बाहर करि परिबा एठी right 10C4 which value is 210 okay 210 ways रे हम ई कमिटी रो सैंपल स्पेस करि परिबा तापरे एबे हमें कंडीशन जोटा बा प्रोबेबिलिटी रो मैनर जो दोची ओके फर्स्ट कंडीशन को देखिबा देयर मस्ट बी वन फ्रॉम ईच कैटेगरी ओके माने प्रत्येक कैटेगरी रो जणे 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 हमें नबा किछि नै सेही सब जते कैटेगरी टोटल जतकी अछंती सेहितरो हमें जनको पई कॉम्बिनेशन बाहर कर देबा ओके सो अकॉर्डिंगली ए सब कंडीशन को हमें मल्टीप्लाई करबा मल्टीप्लाई काहे की करला बिकॉज़ एटा होची इंटरसेक्शन करिवार अछि हमको ओके तणु करी हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करबा इट विल बी 24 ताले रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एबे इजीली बाहर जीवो 24/210 0.1143 तापरे नेक्स्ट सेकंड कंडीशन को होची द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी of 4 has at least one member from the purchase department okay one member purchase department रो हेतबो आउ तीनटा पई किछि से क्राइटेरिया देई नाही ओके किंतु एठी उठे जिन मन रखो एटलिस्ट कोई लिखिला
एटलिस्ट वन मेंबर माने 1 भी ही पारे परचेस डिपार्टमेंट रु 2 भी ही पारे 3 भी ही पारे किंबा 4 भी ही पारे 4 जण जाक परचेस डिपार्टमेंट रो भी हेई पारंती ओके सो ए एटलिस्ट ऊपर टी कंसंट्रेट करिवो सिमिलरली केतेटा क्वेश्चन रे एट मोस्ट थाए ओके से बडा क्वेश्चन आसिले भी हम डिस्कस करिबा सो मन करो एथि हमें 1 फ्रॉम द परचेस डिपार्टमेंट आउ 3 जण अलगा डिपार्टमेंट रो अछंती हला ताले 1 मेंबर को हमें सिलेक्ट करिबा फ्रॉम परचेस दैट इज 4C1 आउ 3 जण जो अलगा डिपार्टमेंट रो अछंती सेमान को हमें सिंपली 6C3 बिकॉज सेमाने टोटल एबे ही जिवे टोटल 6 जण ही जिवे ओके परचेस रे 4 जण अछंती आ बाकी 3 टा रे टोटल 6 जण अछंती सो हिसाब रे यार प्रोबेबिलिटी गुटे पाइला हमें तापरे 2 फ्रॉम द परचेस 2 फ्रॉम द अदर्स ए हिसाब रे पाइला देन 3 फ्रॉम द परचेस 1 फ्रॉम अदर एटा आउ फाइनली ऑल 4 फ्रॉम द परचेस डिपार्टमेंट ए सब को एबे हमें ऐड करबा रिमेंबर एठी हमको ऐड करबा को पड़ियो बिकॉज हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी कि टोटल 4 जणकर पई 4टा मेंबर पई तणु एटा फॉर 1 1 1 एंड 1 ए सब को हमें ऐड करबा ताले यार फाइनल वैल्यू देखिबो आसीबो 0.9286 ओके यार गोटे अल्टरनेटिव वे भी अछि कोन अल्टरनेटिव वे जदि एटलिस्ट 1 मेंबर फ्रॉम द परचेस कहिला हमें ताकू न बाहर करी कि हमें कौन करिबा यार कॉम्प्लीमेंटरी रू बाहर करि परिबा सपोज स्मॉल p हे गला 1 माइनस p दैट इज p माने कोन एठी देयर इज नो पर्सन फ्रॉम द परचेस डिपार्टमेंट दैट इज 1 माइनस 6c4 divided by 10c4 okay that means all 4 persons can be from the other department but not from the purchase department ताले यार वैल्यू को हमें यदि 100 टू माइनस कर देबा 100% दैट इज 1 रू ताले 0.9286 मध्ये यार वैल्यू आसीबो सेम जिंस थर्ड कंडीशन कहूची द प्रोबेबिलिटी दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी इन द कमिटी ऑफ 4 बाकी सब जेते 3 जण जहा पछे होंतु चार्टर्ड अकाउंटेंट निहाती थिबा दरकार ताले सिंपल अछि यार वैल्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट गोटे ही अछि गोटे को ही नबा 1C1 हे जिवो आ बाकी 9 जण रहले सो 9C3 ही जिवो divided by 10c4 so it is 0.4 okay very easily हमें एटा को वैल्यू को बाहर करि पाइला नेक्स्ट प्रॉब्लम भी से वाला गोटे कमिटी फॉर्मेशन कहूची एटा मध्ये तुम इजीली सॉल्व करि परिबो आई होप तापरे आकु बढ़िबा दिस इज सम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एठी कार्ड रो सिलेक्शन करबा को कहूची कार्ड इज ड्रॉन from a well shuffled pack of playing cards find the probability that it is either a diamond or a king okay diamond हेतबो किंबा king हेतबो okay और लागि छि एठी okay so और लागिला माने एठी मने रखो एटा होची तमरो यूनियन okay so हमें फर्स्ट कोन करबा कैपिटल ए कहबा the event for drawing a diamond कैपिटल बी कहबा the event for drawing a king from the pack of cards ताले टोटल केतेरा कार्ड थाए गोटे पैक रे 52 कार्ड्स थाए सेही थरे चारटा सूट थाए ओके सो वी हैव डायमंड्स केते नंबर डायमंड्स थाए ऑब्वियसली 13 टा सो 13 बाय 52 that is 1/4 इगला यार प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड सिमिलरली किंग केतेरा थांती टोटल चारिटा सूट पई चारटा किंग ताले 4/52 that is 1/13 ए दुई प्रोबेबिलिटी हमें पाई साला परे हमको दरकार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डायमंड हितबो किंबा किंग हितबो ओके so in this case we will apply the addition theorem of probability so p of a union b will be equal to pa plus pb minus p of a intersection b तबे इठी a intersection b माने कोन a भी थिबो और b भी थिबो so ए केस रे there is only one chance the king of diamond so p of a intersection b will be how much 1/52 so after putting its value we can find the value of p of a union b finally यार value आसीबो 4/13 okay moving on next problem रे एठी p a p b यार value directly दे देला तापर कहूची p of at least one of a and b यार माने हला it is nothing but a union b okay पचारची कोन find p only one of a and b okay
एंड बी कहला माने एठी इंटरसेक्शन पड़िबो किंतु ओनली वन कहूची माने ए एंड नॉट बी बा ए इंटरसेक्शन बी बार और नॉट ए एंड बी माने ए बार इंटरसेक्शन बी. Okay, hence the required probability will be how much? Suppose याको आमे जदि कहूची small p, this will be equal to capital P, that is only one of A and B. So pi plus p double I. Okay, माने this is I, this is double I, दुईटा को ऐड करिवार अछि एडिशन थ्योरम. ओके, दुईटा वैल्यू आमे बाहर करिया को चेष्टा करिवा एबे. सो किछि नै सेही एडिशन थ्योरम रु यार वैल्यू तमे इजीली पाई जिवो. ये भले आसीबो देखिबो दुईटा समान जिनस प्लस माइनस रे थिबो कटि जिवो. ओके, तापरे एठी यार रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दबार अछि. आमे जानिनु एठी p ऑफ a इंटरसेक्शन b कोन. ओके, ठीक अछि. आमे फर्दर कोन करिबा एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी रो पकेबा p ऑफ a यूनियन b. एथिरे आमे p ऑफ a इंटरसेक्शन b वैल्यूटा पाई परिबा जार वैल्यू आसीबो 0.3. तो याकू आमे एबे ए इक्वेशन डबल स्टार रे पुट करि परिबा. फाइनली यार वैल्यू आसीबो 0.5. ओके, तापरे नेक्स्ट प्रॉब्लम, choose the correct alternative for two equally likely exhaustive and independent events देदेला a और b p of ab. okay, so एठी कहूची 0, 0.25, 0.50 and 1. okay, तापरे second bit रे कहूची comment on the following that a and b are two events such that pa equal to 1/4, pb देदेला, pa union b देदेला, hence p of b bar a. ओके, यार वैल्यू 1/5 बाहरिबो. अच्छा, फर्स्ट पार्ट को जिबा. देखो एटी क्वेश्चन ही कहूचे जे सिंस a and b are equally likely, so pa equal to pb हेबो. जेहेतु समान समान प्रोबेबिलिटी अछि, सपोज एटा को हमें कहला स्मॉल p. ओके, फर्दर सिंस a and b are given to be exhaustive, ओके, तेणु pa plus bb equal to 1 हेबो. ओके, बिकॉज दुईटा इवेंट अछि आउ तीन नंबर तो किछि नै, ए दुईटा रो प्रोबेबिलिटी मिसी की 100% हेबो. दैट मींस 2p equal to 1 और p equal to small p, that is equal to half. ओके, तापरे आमे pa और pb पाई गला जोटा की थिला हमरो small p which is will equal to half. Now since a and b are independent also, so p of a intersection b will be how much? এটা multiplication theorem रो आसिला pa into pb. So half into half, that is 1/4 or 0.25. okay, now the second bit, that is number 2 will be the correct alternative. 0.25 will be the right answer. second bit को बजिबा p of a union b, एटा एडिशन थ्योरम में लगेला, तार रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करला. ओके, हमको p इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b बाहर करिवार अछि जार वैल्यू आसीबो 1/12. तापरे p of b bar a यार वैल्यू हमें पुट कर देला थ्योरम रु 1/3 आसीबो. सो अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन टा ठीक थिबो. ओके, सेन तापरे नेक्स्ट प्रॉब्लम, एटा सिमिलरली सेम टाइप रो प्रॉब्लम अछि. ओके, आई होप यू कैन डू दिस आल्सो. जो बळे हमें ऊपरे ई प्रॉब्लम टा को सॉल्व करला. तापरे किछटा प्रॉब्लम एटा तमरो सेट हिसाब रे देछि, माने सेट थ्योरी रो एप्लीकेशन करी कि हमें जो ऊपरे केतेटा थ्योरम्स देखितिला से हिसाब रे याकू सॉल्व करिवार अछि. आई होप यू कैन डू दिस आल्सो. ओके, मु सब प्रॉब्लम करूनी, केतेटा प्रॉब्लम मु स्किप भी करूची. मूविंग ऑन, एटा गुटे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखो. एठी कहूची गुटे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोन करची से जॉब पाई अप्लाई करची. ओके, दुईटा फार्म अछि, गुटे x आ गुटे हला y. He estimates that the probability that he will be selected in farm x is 0.7 आउ farm y रे रिजेक्ट हेबार चांस होची 0.5. right? Now the probability of at least one of his application being rejected is 0.6. Then what is the probability that he will be selected in one of the two farms? okay, एठी क्वेश्चन को भलो भाबरे पढिबार अछि. ओके, देखो क्वेश्चन रे x पाई सिलेक्शन कहूची, y पाई रिजेक्शन दउची. माने सपोज हमें कहला a और b डिनोट करची इवेंट्स that chartered accountant will be selected. ओके, सिलेक्टेड हमें कॉमन कर देला इन फार्म x एंड y रेस्पेक्टिवली. ताले pa हमको दे देला 0.7. ओके, pa बार माने रिजेक्टेड हे जिवो.
x रे will be how much 1 minus 0.7 এটা তো ଦେଖିଛ 0.3 ଆସିଲା ତାପରେ क्वेश्चन ही हमको दउची rejected that is pb bar equal to 0.5 ताले pb ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ 1 minus 0.5 that is equal to 0.5 ओके ताପରେ नेक्स्ट कहूची probability of at least one of his application being rejected reject ही जिवो माने एठी हमें नेगेटिव आड़ को जिबा so p of a bar union b bar is 0.6 ओके हमें एबे यूज करबा डी मॉर्गन्स लॉ ओके जोटा कहूची a bar intersection b bar रो whole bar will be equal to how much a bar union b bar okay so याको हमें अप्लाई करि परिबा so that p of a intersection b will be how much 1 minus p of a bar intersection b bar रो whole bar okay that is 1 minus p of a bar union b bar simply यार वैल्यू आसीगला 0.4 okay then the probability that the chartered accountant will be selected in one of the two firms এটা हमको क्वेश्चन पचारची so p of a union b हे जबो एबे एडिशन थ्योरम रो हम इजीली पाई जबा फाइनल वैल्यू 0.8 राइट तापरे नेक्स्ट प्रॉब्लम एठी गोटे कहूची प्रॉब्लम the probability that a man will be alive 25 years and hence is 0.3 now the probability that his wife will be alive 25 years and hence is 0.4 now find the probability that 25 years hence number 1 reguchi both will be alive then only the men will be alive only women will be alive then none will be alive at least one of them will be alive okay so हमें कहूछु एबे दुईटा नोटेशन करिबा गोटे हला a that the man is alive for 25 years b हला that the woman that is his wife is alive for 25 years then p a दे दोछि 0.3 p b दे देला 0.4 then first bit रे कहूछि probability that 25 years and hence both of them that is the man and the woman will be alive will be how much both जेतेबेले कहला माने and कहूछि include करछि common नउछि so p of a intersection b करिवो so एठी pa into pb multiplication theorem आसीजिवो आउ तो किछि आउ थर्ड किछि चांस नाही so pa into pb that is 0.12 okay because they are independent right तापरे probability that the man will be alive माने a by positive b by negative so a intersection b bar okay यार वैल्यू इजीली पाई गलो 0.18 सिमिलरली बाकी बिट्स भी तमे इजीली करि परिबो ओके गोटे एठी देखो लास्ट बिटटा प्रोबेबिलिटी जो नंबर बिट 5 हला प्रोबेबिलिटी that 25 years and hence at least one of them will be alive so याको हमें कोन करिबा 1 minus capital P none will be alive कर देबा okay so 1 minus 0.42 that is 0.58 okay so required probability याकू आ गोटे अल्टरनेटिव वे रे भी करा जाय परिबो p of a union b हमें लगेबा एठी हमें एडिशन थ्योरम यूज करिबा p a इंटरसेक्शन b जाय लिखिबा p a into p b रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर देले 0.58 अगेन आसी गला ओके तापरे नेक्स्ट प्रॉब्लम एटा भी सिमिलर प्रॉब्लम गोटे जेमति हमें ऊपर गोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट रो प्रॉब्लम सॉल्व करथिला सेही बळे एठी गोटे कॉन्ट्रैक्टर रो कॉन्ट्रैक्ट विषय रे देछि सेम वे रे एटा भी मते लागुची सॉल्व हबो ओके आई होप तमे एटा भी सॉल्व करि परिबो ओके तापरे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम एटा भी सेम टाइप रो अछि ओके देखो एठी कहूची a problem in statistics is given to two students दुटा स्टूडेंट a और b the odds in favor of a solving the problem are 6 to 9 and the against b solving the problem are 12 to 10 if both a and b attempt and find now the probability of the problem being solved okay माने एठी हमें को डिफाइन करिबार अछि दुटा इवेंट्स गोटे हला e1 आ गोटे e2 e1 माने कोन दैट a is solving the problem e2 b is solving the problem then probability of e1 will be how much माने a by problem solve करिबार एठी जदि हमें देखिबा 6 दे दीची ऊपर देखि देला तापरे 6 रु 9 कहूची माने 6 plus 9 तळे हेबो okay so 6 by 15 will be 2 by 5 similarly p of e2
एठी लोएस्ट केते अछि 10 10 को हम ऊपर लिखिला तापरे 12 रू 10 अछि दुटा को जोग कर देला सो will be equal to 5 by 11. Now assuming that A and B try to solve the problem independently ताले E1 E2 will be independent that means एबे intersection लगेला हमें multiplication theorem पाई जिबा 2 by 11 यार value आसीबो then we go for the addition theorem because the problem will be solved if at least one of the students A and B solve the problem hence probability এই प्रॉब्लम को सॉल्व करबा पई P of E1 union E2 एटा एडिशन थ्योरम लागिला रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर देला 0.673 आसी गला तापरे प्रोबेबिलिटी E1 union E2 ओके 1 आउ 2 रु हमें एति की वैल्यू पाइला ओके तापरे याकू हमें अल्टरनेटिव वे रे जदी करबा को चेष्टा करबा ओके सेम जिंस सेम आंसर भी पाई परिबा एठी 1 माइनस P of E1 intersection E2 okay E1 bar intersection E2 bar okay and then we can change the value by using the multiplication theorem because both the events are independent এই হিসাବରେ problem को solve कले मध्य 37 by 55 जोटा एठी मध्य आस्तिला that will be equal to 0.673 right moving on एटा मध्य similar problem जोटा हम ऊपर डिस्कस कला okay so you can solve it now এটা गोटे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ओके एठी कार्ड्स ऊपर कहूची गोटे मैन he dealt 4 spade cards from an ordinary pack of 52 cards now if he is given 3 more cards then find the probability P that at least one of the additional cards is also a spade okay problem को बुझिबा हमें गोटे लोक चारिटा कार्ड बाछुची गोटे ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स रु ओके नाउ एठी क्वेश्चन कहूची जे जदी ताको आहुरी तीनटा कार्ड दिया गला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट one of the additional cards is also a spade so after याको concept वाइज एठी लिखी जे देखो after a man is dealt 4 spade cards चारटा spades cards से बाहर करि सारिची from ordinary pack of 52 ताले एठी पैक रे केतेटा कार्ड रहिला 52 minus 4 that is 48 cards are left in the pack out of which चारटा जेतु स्पेड बाहरी जाईची माने 13 रु 4 कटि गला टोटल 9 टा स्पेड्स आ बाकी अछि ओके आ बाकी जो 39 कार्ड्स सेटा होची नॉन स्पेड्स कार्ड्स ओके माने तमरो एठी क्लब हे पारे बा डायमंड हे पारे बा हार्ट हे पारे राइट कार्ड चारिटा सूट थाए क्लब डायमंड हार्ट एंड स्पेड्स so now 3 more cards can be dealt to the same man out of the 48 cards जोटा हमर अछि बाकी so याको हमें कॉम्बिनेशन लगेले 48 C3 वे रे हमें बाहर करि परिबा ओके exhaustive number of ways now if none of these 3 additional cards is a spade हमें नेगेटिव वर्ड को जदी जिबा okay none is a spade then the 3 additional cards must be drawn out of the 39 non-spade cards it can be drawn in 39 C3 ways so probability that none of the 3 cards will be spades is how much this by this right so a required probability जोटा हमको क्वेश्चन को small p हमें इजीली बाहर करि परिबा ओके एटा नेगेटिव सो 1 माइनस दिस ओके या को वैल्यू पुट कर दी कि सॉल्व करले देखिबा आसीबो 0.4718 ओके तापरे नेक्स्ट प्रॉब्लम को जिबा this is also an interesting problem find the probability of throwing 6 at least once in 6 throws with a single die okay गोटे सिंगल डाय को हमें 6 थर थ्रो करिबा किंतु प्रोबेबिलिटी बाहर करिबा जे थरे जेमती 6 आसीबो ओके सो देखो हमें जानि छु एठी इवेंट को हमें डिनोट कर देला ei where I is equal to 1 2 3 4 5 6 denote the event of getting a 6 in the ith throw of a single die आमे जानिनु फर्स्ट थ्रो रे भी 6 आसी पारे सेकंड रे भी आसी पारे थर्ड फोर्थ सिक्स्थ रे भी आसी पारे so PEI equal to 1 by 6 or PEI bar will be how much will be 1 minus 1 by 6 that is equal to 5 by 6
Now the probability that in the 6th throws of a single die we get 6 at least once केवल थोड़े आसीबार अछि चौथर थ्रो कला भितरे केवल थोड़े ही 6 जेमती आसीबो ओके सो at least कहला माने एठी हमको यूनियन करबा को पड़िबो so P of E1 union E2 union E3 up to E6 which is nothing but 1 minus P of E1 bar intersection E2 bar intersection E3 bar up to E6 bar right एठी all these are independent okay because गोटे लूडो को आमे जदि बा गोटे डाय को आमे जदि रोल करछु केवल गोटे ही तार आउटकम आसे ओके सो दे आर इंडिपेंडेंट सो आमे इजीली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ए हिसाब रे लगे परिबा ओके सो यार वैल्यू केते आमे बाहर करछु ऑलरेडी 5/6 सो 5/6 टू द पावर 6 1 माइनस एति करले हमर आंसर आसी जिवो ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम एटा मध्ये similar गोटे प्रॉब्लम अछि the odds that A speaks the truth are 3:2 okay and the odds that B speaks the truth are 5:3 in what percentage of cases are they likely to contradict each other on an identical point okay so मने करो इवेंट आमे दुईटा को डिनोट कला E1 जे A सत कहूची E2 that B सत कहूची ताले E1 बार E2 बार हे गला कोन दुई जण जाको मिछ कहउचंती so we are given PE1 will be how much एटी 3:2 देउची मिनिमम टा आमे जदी एठी बाहर करिबा ताले 3 plus 2 तो आसी गला तमरो टोटल टा 3/3 plus 2 so it is equal to 3/5 okay तापरे PE1 बाहर ही जबो कते 1 minus कर देले 2/5 similarly PE2 will be how much 5:3 देइची so 5/5 plus 3 okay एटा थ्योरम रो आछि पिला माने so यार वैल्यू आसिला 5/8 accordingly P of E2 बाहर ही गला 3/8 1 minus करले now the event E that A and B contradict each other on an identical point माने जणे अन्य जनक कथा कॉन्ट्राडिक्ट करिवो समान कथारे ओके कैन हैपन इन द फॉलोइंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज माने केई समय रे नंबर 1 A speaks the truth and B tells a lie that is the event E1 intersection E2 bar किंबा A जदि मिछ कहूची आ B सत कहूची that means E1 bar intersection E2 okay so ए दुईटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस रे ही एटा आसी परिबो so addition theorem आमे जदि लगेबा PE will be how much equal to P1 plus P2 okay simple addition theorem because so एठी आमे एबे यारो वैल्यू पुट कर देला okay so वैल्यू पुट कर देला परे जेतु से माने independent they are mutually independent so multiplication theorem हमें एठी पुट कर देला respective values पुट कर देले बाहर गला आंसर 0.475 which is nothing but 47.5% okay which is the required answer तापरे next problem three groups of children contain respectively 3 girls and 1 boy 2 girls 2 boys then 1 girl and 3 boys okay now out of these groups one child is selected at random from each group so that the chance that the three selected consist of 1 girl and 2 boys is already दे देला एटा प्रूव करो 13/32 हबा कथा यारो आंसर so suppose हमें कहूछु B1 B2 B3 be the events of drawing a boy from first, second and third group respectively. Okay, B for boy. G1, G2, G3 egla events of drawing a girl from the first, second, third group respectively. ताले probability easily लिखि थी परिबो PB1 equal to 1/4, PB2 2/4, PB3 3/4, PG1 3/4, PG2 2/4, PG3 1/4. तापरे the required event of getting 1 girl and 2 boys in a random selection of 3 children can materialize एबे देखो एठी चांस कथा हमें आसीबा ओके हमको तीनटा बाहर करिवार अछि केमती गर्ल from the first group
बॉयज फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप एटा गोटे इवेंट हो पारिबो ओके तापरे गर्ल फ्रॉम द सेकेंड ग्रुप बॉयज फ्रॉम द फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप एटा भी गोटे चांस हो पारिबो आउ गर्ल फ्रॉम द थर्ड ग्रुप एंड बॉयज फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप तीनटा आमर चांस आसीगला सो एडिशन थ्योरम लगेले ये तीनटा जाक चांस को हमको ऐड करबा को पड़िबो ताले the task becomes very easy as they are independent, so we can apply the multiplication theorem, right? So finally our value 13/32 asibo okay tapare next problem finally the probability that a management trainee will remain with a company is 0.60 mane 60%. Then the probability that an employee earns more than 10,000 per month is 0.50. Probability that an employee is a management trainee who remained with the company or who earns more than 10,000 per month is 0.70. Then what is the probability that an employee earns more than 10,000 per month given that he is a management trainee who stayed with the company? Okay, बहुत ही लंबा चौड़ा प्रॉब्लम अच्छी याकू आमे स्टेप बाय स्टेप बुझिबा देखो आमे इवेंट्स को सिंपली डिनोट कर देवा ए हेगला मैनेजमेंट ट्रेनी हु इज रिमेनिंग विद द कंपनी बी हेगला द एम्प्लॉई हु इज अर्निंग मोर देन 10,000 पर मंथ ताले हमको दे दीची पी ए रो वैल्यू और पी बी रो वैल्यू 0.60 0.50 क्वेश्चन पचारची प्रोबेबिलिटी that a management trainee remains with the company or earns more than 10,000 per month और कहला माने एठी हमें बुझिबा P of A union B यार वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन दे दीची 0.70 ताले एडिशन थ्योरम रो यार वैल्यू आसीगला एबे याकू एंड रे बाहर करिया माने A इंटरसेक्शन B बाहर करिबा ओके सो यार वैल्यू रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जोटा क्वेश्चन पचारुची केते हेबो देखो यार वैल्यू आसीगला 0.4 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जोटा पचारुची क्वेश्चन कोन कहला दैट फाइंड that what is the probability that an employee earns more than 10,000 per month given that he is a management trainee who stayed with the company माने याकू हमें बुझिबा P of B bar A right यार वैल्यू हला h bar the theorem is P of A intersection B divided by P A so यार वैल्यू पुट कर देले आसीगला 2/3 which is the required answer okay या पर भी आहरी बहुत गुड़ाए प्रॉब्लम अच्छी which I am leaving for you as a task okay so ऊपर जो प्रॉब्लम बा एक्सरसाइज आमे देखला सेही हिसाब रे एठी मध्य याकू सॉल्व करिया को पड़िबो मूविंग ऑन टू सम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो थरे कि आमे ऑलरेडी देखितिला जे गोटे बैग रु सम डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल्स थाए से बॉल किछिटा डेफिनेट नंबर ऑफ बॉल्स को ड्रॉ करिवार अछि सो ए भलिया क्वेश्चन भी आसी पारे ओके एठी मध्ये सेम टाइप रो क्वेश्चन बैग कंटेनिंग 8 रेड एंड 5 व्हाइट बॉल्स तापरे two successive drawings of 3 balls are made such that number 1 कहूची balls are replaced before the second trial number 2 कहूची balls are not replaced before the second trial then find out the probability that the first drawing will give you 3 white balls and the second will give you 3 red balls तबे suppose हमें एठी इवेंट को डिनोट करला with capital A of drawing 3 white balls similarly B हेगला the event for getting 3 red balls in the second draw then we have to find out the probability देखो एठी probability हमको बाहर करिवार अछि A intersection B okay so आमे कौन करिबा फास्ट देखिबा जे ड्राइंग विथ रिप्लेसमेंट माने कौन जो बॉल ड्रॉ करा जाइथो पुनी सेही बैग रे भर दिया जिवो ओके सो इफ द बॉल्स आर ड्रॉन in the first draw are replaced back in the bag before the second draw then the events A and B will be independent and the required probability is given by the compound probability theorem that means एठी P of A intersection B will be equal to PA into PB एठी ठीक प्रिंटिंग मिस्टेक अछि okay this should be P now first draw रे हमें कोन करजु 3 balls can be drawn out of total केते अछि 8 plus 5 that is 13 balls so 13C
2 ways रे आमे बाहर करि परिबा exhaustive number of cases पाइगला in order that all these are white they must be drawn out of 5 white balls याको आमे बाहर करिबा 5C3 ways रे so PA पाइगला similarly second row रे आमे सेही भलिया first row रू replace करि परिबा same आसीबो यार probability second row रे एबे आमे जदि कहूचु जे probability of getting 3 red balls in the second row ताले PB ही गला केते 8C3 divided by 13C3 so एबे P of A intersection B will be simply given by the multiplication जोटा ए theorem रो आछी ओके एटा होची with replacement किंतु सेकंड कहूची एबे without replacement रे एबे हमर theorem टा चेंज हे जिवो PA intersection B equal to PA into PB bar A okay so PA already हमें पाई सारचु हमर बाहर करबा अछि ए जिंस PB bar A if the three white balls which were drawn in the first row are not replaced back बाहर को आणला पर आउ बैग रे पुणी भरी दिया जीवो नाही then we will have now 13 minus 3 equal to 10 balls left in the bag so PB bar A is the probability of getting 3 red balls from the remaining 10 balls out of which 2 are white and 8 will be red so PB bar A is nothing but 8C3 divided by 10C3 ताले आसीगला हमरो फाइनल रिजल्ट PA intersection B is this much okay so सेही भलिया balls गोटे बैग रु काढिबार आहुरी भी प्रॉब्लम अछि ओके यू कैन सी एटी सॉल्यूशन हिसाब रे याको देइची यू कैन रीड इट आउट एंड ट्राई टू सॉल्व इट एटी देखो ग्लोव्स गोल्फ रो ग्लोव्स कथा कहूची केतरा लेफ्ट हैंडेड अछि केतरा राइट हैंडेड सिमिलर प्रॉब्लम एटा ओके आई होप एई सब प्रॉब्लम मोटा स्किप करूची बिकॉज एते गुडा सब जिंस को डिटेल एनालिसिस कले ठीक हबनी आई कैन say that better you try for solving these problems some of the problems may be complicated जोटा end portion आड़को अछि देखो केतरा complicated problem भी अछि जोथरे कि conceptual problem बहुत रहउछि okay so I hope you can try and solve these problems आ जो जगह रे किछि printing mistake बा किछि problem हला you can tell in the comment box okay I will try to help you okay Thank you.